कम्युनिटी को इसकी जरूरत है। 24 बार रिजेक्ट किया है आपने इसे और हर बार हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला है। Not this time. It's perfect. Do you want to know what I think? You were right. तुम्हारा ये प्लान बिल्कुल परफेक्ट। पर ये मैं इस प्रोजेक्ट में सिर्फ इन्वेस्टर नहीं हूँ, आई एम ऑल्सो वेरी वेरी प्राउड फादर। Every moment that makes you you deserves to be celebrated with gold. So thank you, Vivek. So I request you, Sogli, you can continue the session. Okay, so am I audible? You can. Yeah, audible. Saurabh just. Yeah, perfect. Okay, very good afternoon. Sabko namaskar. Thank you for all of you to come on this webinar, and I also want to thank IBJA as always. You know, they have been very cooperative in arranging this webinar. I will also speak in Hindi, so that you know the people who are not comfortable with English can hear in Hindi, and those who are wanting to listen in English, they will be happy to listen in English. We have interacted with you, but I think the reason why we wanted to have this webinar was very important for all of us, because there have been some developments related to the tariff rate quota. Okay, and that is the reason we wanted to update you all that what are the developments, how IIBX can become your preferred gateway to import the TRQ gold. And I am quite sure that once we go through this talk, and we will also have some question and answer session going forward, I am sure you will find that there are a lot of benefits if you import your tariff rate quota gold through IIBX. आप सभी का वेबिनार में स्वागत है। काफी टाइम से हम लोगों ने आपसे बात नहीं किया था, क्योंकि पिछली बार भी जब हमने बात किया था तो वो भी IBJA के सौजन्य से बात हुई थी। मैं IBJA को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, और जो उनके स्पॉन्सर हैं वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल, उनको भी। अभी पिछले कुछ समय में टैरिफ रेट कोटा को लेके कुछ नए नए इनेबलर्स आए हैं, जो कि DGFT से भी आए हैं और डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से भी आए हैं। तो हम ये दोनों ये आपको इसके बारे में बताना चाह रहे थे, और ये भी बताना चाह रहे थे कि IIBX में इस बीच में क्या क्या चीजें हुई हैं जिससे टैरिफ रेट कोटा का गोल्ड लेने में आप सभी को सहूलियत होगी। तो हमारा ये विचार है कि आज की वेबिनार आपके लिए काफी उपयोगी रहेगी, और हम आपस में जैसा मैं बताऊंगा, और फिर बाद में जो भी क्वेश्चन आंसर होगा या आपके जो भी विचार होंगे उनको भी हम ले लेंगे, और सौरभ जी उसका इंतजाम करेंगे और उसके हिसाब से हम उसका जवाब देते रहेंगे। So coming back to very important development which happened last year, and which allowed us to offer the tariff rate quota gold to the qualified jewelers at that point of time, was the implementation of IceGate. IceGate is a custom portal where all the import and exports are recorded, and you will be very happy to know, and we are very proud to say this, that Gift City SEZ is the first SEZ in the country to have the IceGate. And once the IceGate came, it became possible for us to offer you all the tariff rate quota gold through IIBX. Till that time, it was only possible through two routes, that either you are a qualified jeweler with IIBX, meeting some of the criteria which are there, like 25 crore net worth, meeting the fit and proper criteria, and other such requirements which are there. And our team has been engaging with you, and if somebody has any doubt, we'll share those details. And there was one more route which was enabled by DGFT in 2022 itself, where they had said that the tariff rate quota holders, that is the TRQ holders,
they can take the gold through IIBX through the qualified jewelers. So we were happy to note that the qualified jewelers, many of them, they came and they started taking gold through us. But not only that, some of the valid TRQ holders also started taking the gold through the qualified jewelers. So that was a good sign for IIBX, because IIBX is your exchange. So now I'll switch to Hindi so that I just tell whatever I have told till now. आप सभी को ये मालूम भी होगा और नहीं मालूम है तो बता देता हूं मैं कि 10th में 2023 लास्ट ईयर IIBX में हम लोग टैरिफ रेट कोटा का गोल्ड ऑफर कर पाए। वो किस वजह से ऑफर कर पाए? क्योंकि 10th मई को आइस गेट गिफ्ट सिटी SEZ में लगा। ये कंट्री का पहला SEZ था जहां पे आइस गेट लगा। अभी और SEZ में भी आइस गेट का काम हो रहा है जो हम आपको बाद में बताएंगे। लेकिन ये मिस्टर रोहित ने लिखा है, प्लीज मिस्टर रोहित, आई एम स्पीकिंग इन इंग्लिश एंड हिंदी बोथ, सो प्लीज आई थिंक यू विल बेयर विद मी। ओके, एंड तो जैसा कि आपने तो 10th मई को जब आइस गेट लगा तो उसके बाद से हम टैरिफ रेट कोटा यहाँ पे दे पाए। उस समय के प्रावधान के हिसाब से जो क्वालिफाइड ज्वेलर्स के मापदंड मीट करते हैं, जिनको क्वालिफाइड ज्वेलर बनने के लिए 25 करोड़ का नेटवर्थ चाहिए और फिट एंड प्रॉपर के जो नियम है वो उसके तहत वो आते हो, और भी उसके कई नियम है जो आप चाहेंगे तो बता देंगे। वैसे हमारी टीम आप सभी से इस बारे में बातचीत कर चुकी है और हमारी वेबसाइट पे भी ये सभी चीजें उपलब्ध है। उसके अलावा क्वालिफाइड ज्वेलर के अलावा एक और इनेबलर था हमारे पास जो कि DGFT ने 2022 में ही दिया था। वो ये था कि जो भी क्वालिफाइड TRQ होल्डर्स हैं वो क्वालिफाइड ज्वेलर के थ्रू IIBX से TRQ गोल्ड ले सकते हैं। सो 10 मई के बाद से हमारे पास क्वालिफाइड ज्वेलर और TRQ होल्डर इन दिस रूट वाया क्वालिफाइड ज्वेलर हमसे गोल्ड लेते रहे। लेकिन इसके बाद भी थैंक्स टू अवर रेगुलेटर IFSCA हमारे यहाँ डिस्कशंस चल रहे थे विद DGFT, और उसमें जो नए चेंजेस आए हैं वो मैं अब आपको बताऊंगा। सो आई विल नाउ स्विच टू इंग्लिश। सो पोस्ट those two enablers where the QJ as well as the valid TRQ holders through the qualified two enablers came in the month of November, December. So first enabler came from the DGFT. DGFT enabled that now valid TRQ holder under India UAE SEPA can take gold directly through IIBX. So this was first thing, and this has been the demand of many of the TRQ holders, whether they can take the gold directly through IIBX. And the second enabler which came, and I will read out that notification because it is important for you to know this notification. This is a notification number 66/2023 customs dated 22nd December 2023, which was issued by the Department of Revenue, Ministry of Finance. What this notification says that if the importer and the TRQ holder are the same entity, then the IGCR rules and the end use conditions will not be applicable. Okay, so I'll repeat. And I can read that exactly what it says. Provided that customs, IGCR or for specified end use rules 2022 shall not be applicable if the importer and the TRQ holder are the same entity. Now, what does it mean? That the DGFT enabled all the TRQ holders who can now take the gold directly through IIBX, and of course the qualified jeweler route was always there. So if the qualified jeweler who have the TRQ holder and the TRQ holders who directly will be onboarded now by the IIBX, so they can now take the tariff rate quota gold through IIBX, whereby the IGCR rules and the end use restrictions will not be applicable to them. So this is the meaning of this notification. So this is this makes it very simple. This makes it very simple
for the qualified jewelers and for the TRQ holders to get onboarded on IIBX and take their tariff rate quota gold through IIBX without adherence to IGCR rules or any end use restrictions. If I can explain it further, because this question has been asked number of times, because earlier there was a restriction that there has to be some manufacturing and some job work. There was confusion regarding that. So now because these restrictions have been removed, so what we have been given to understand that now the entities which are directly importing the tariff rate quota gold through IIBX, because they are the direct importer and they are the TRQ holders, then they need not adhere to these end use restrictions and IGCR rules. So that means if they are having the bars with them, so they can make the jewelry, they can give it to the job work and whatever they want to do, or they can also sell these bars in the market. This has been the understanding which has been given to us. So now I will explain these things in Hindi also quickly. तो आप सभी को ये जान के अच्छा लगेगा कि और ये काफी टीआरक्यू होल्डर्स का डिमांड भी था, और इफ्सका की पहल पे, इफ्सका जो कि हमारे रेगुलेटर है आईएफएससीए, उनकी पहल पे और काफी डिस्कशंस करने के बाद डीजीएफटी से, तो डीजीएफटी से एक सर्कुलर निकला, नोटिफिकेशन निकला, जिसमें उन्होंने ये बताया कि जो वैलिड टीआरक्यू होल्डर्स हैं वो भी आईआईबीएक्स से डायरेक्टली गोल्ड इंपोर्ट कर सकते हैं। उसमें सिर्फ एक ही कंडीशन में बताता हूँ कि आपका जितना कोटा है आप उतना ही ले सकते हैं। अगर आपको 50 किलो मिला है टीआरक्यू कोटा, तो आप 50 किलो ही ले सकते हैं। तो उतना कोटा है जितना आप उतना ले सकते हैं, वो आप डायरेक्टली आईआईबीएक्स के थ्रू ले सकते हैं। ये नोटिफिकेशन डीजीएफटी का आ गया। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आया, जिसको मैं पढ़ देता हूं आप सभी के लिए। ये नोटिफिकेशन नंबर 6666 है, स्ट्रोक 2023, डेटेड 22 दिसंबर 2023, और ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन के तहत ये बताया गया है, आप लोग इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और खुद भी पढ़ सकते हैं। इस नोटिफिकेशन के तहत ये बताया गया है कि अगर इंपोर्टर और टीआरक्यू होल्डर सेम एंटिटीज हैं तो उनके ऊपर आईजीसीआर रूल्स या एंड यूज रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगेंगे। अब टीआरक्यू होल्डर जो कि आईआईबीएक्स पे आते हैं आइदर एज अ क्वालिफाइड ज्वेलर, और इफ अगर वो क्वालिफाइड ज्वेलर के लिए एलिजिबल नहीं है तो एज अ वैलिड टीआरक्यू होल्डर वो अगर आते हैं आईआईबीएक्स पे, तो यहां से अगर जब गोल्ड लेते हैं तो वो डायरेक्ट इंपोर्टर बन जाते हैं। सो ये कंडीशन आपके लिए जब आप आईआईबीएक्स से टीआरक्यू कोटा लेते हैं तो एप्लीकेबल होती है। तो इस केस में आपके ऊपर आईजीसीआर रूल्स और एंड यूज रेस्ट्रिक्शन नहीं लगेगा। जैसा कि आपको पहले पता है कि पहले जो इसमें एंड यूज रेस्ट्रिक्शंस और वो थे जिसमें आपको ज्वेलरी बनाना पड़ता था, खुद मैन्युफैक्चर करना पड़ता था या जॉब वर्क करना पड़ता था, उसमें भी थोड़ा सा कंफ्यूजन था लोगों को। लेकिन जैसा भी जिसकी जो गाइडेंस मिली उसके हिसाब से वो लोग उस पर काम कर रहे थे। अभी हमको ऐसा बताया गया है कि इस नियम के तहत अगर आप इंपोर्ट करते हैं गोल्ड को तो आप उसका ज्वेलरी बना सकते हैं, खुद मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, जॉब वर्क कर सकते हैं, या आप उस गोल्ड को, गोल्ड बार को भी मार्केट में आप अगर उसको आगे बेचना चाहें तो आप उसको बेच सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, जिसके लिए मेरा ऐसा मानना है कि अब इसीलिए हमने इस वेबिनार का टाइटल दिया कि जो IIBX है, दिस इज नाउ this will become a preferred gateway for TRQ gold import in India. Okay, now I will switch back to English and also tell you that what all steps we have taken. So I'm happy to advise to all of you that our regulator IFSCA has issued a circular whereby they have given the enabler that now IIBX can onboard the valid TRQ holders, and for that we have already issued our circular. We have posted the circular issued by IFSCA on our website. And one very important thing which I want to share with you all is that we have created a SOP, standing operating procedure, in consultation with our depository, which is IIDI, India International Depository IFSC Limited, whereby a set of documents, a common set of documents has been identified.
so that you need not give the documents again and again. So as per that SOP, because you have to upload it, and those SOP very detailed, if you just see that SOP and tick one by one, in one shot, you can send all the documents without any problem to us. This is very important for all of us to understand. And that with that SOP, we have an internal portal whereby you need not give those documents again to the depository. Only the 2-3 documents which are required by depository, only that you have to give once you get a certificate from IFSCA that now you are a valid TRQ holder under India UAE SEPA, and you can import gold through IIBX under your respective quota which is available to you. And we are happy to report that almost, I believe, 60 plus applications are already with us for getting onboarded. And I am also happy to report that we have started getting approvals from IFSCA, and we have started communicating to the respective applicants that they are now onboarded. And I'll also tell you what are the next steps. So let me just switch to Hindi now, and then I'll come to the other steps. So आप सभी को ये जान के बहुत अच्छा लगेगा कि हमारे जो रेगुलेटर हैं IFSCA, जब ये नोटिफिकेशन दोनों आ गए DGFT के और डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के, तो साथ ही साथ हम लोगों ने IFSCA ने एक सर्कुलर इशू किया जिसके तहत उन्होंने वैलिड TRQ होल्डर्स को ऑनबोर्ड करने की परमिशन दी हमको, और उसके लिए सर्कुलर निकाला, जो सर्कुलर हमने अपनी वेबसाइट पे डाल दिया है. सिमिलरली IFSCA ने भी अपना एक सर्कुलर, IIBX ने भी अपना एक सर्कुलर निकाला है जो कि वेबसाइट पे डाला है. उसके तहत हम एक चीज और बताना चाह रहे हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ऑनबोर्डिंग के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, उसकी हमने एक SOP बनाई है, और बहुत ही डिटेल्ड SOP है. अगर आप उस SOP को एक एक करके पढ़ेंगे और टिक करते चले जाएंगे, आप वन शॉट में क्लियर डॉक्यूमेंट्स हमको सबमिट कर पाएंगे. और ये SOP हमारी जो तैयार की गई है, ये हमारी जो डिपॉजिटरी है, सहयोगी संस्था IIDI, इंडिया इंटरनेशनल डिपॉजिटरी IFSC लिमिटेड, उनके सहयोग से तैयार की गई है. और ये जो आप इलेक्ट्रॉनिकली डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे और उसके बाद जो उसको फिजिकल भेजेंगे, तो जो इलेक्ट्रॉनिकली आप डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे वो उसका एक्सेस IIDI के पास भी रहेगा, तो आपको दोबारा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी. अदर देन जो 2 और 3 डॉक्यूमेंट्स उनको स्पेसिफिकली उनकी एप्लीकेशन के हिसाब से चाहिए, वो आप उनको देंगे. तो इसके तहत और हमारा ये विचार है कि ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं, ये हम आपके जो ट्रेडिंग मेंबर है जिनको आप सेलेक्ट करेंगे, उनके थ्रू भी उनको भी ये मतलब शेयर करें, ताकि वो भी आपसे बार बार ना डॉक्यूमेंट्स मांगे, और ये प्रोसेस को हम बहुत जल्दी कर सके. After that, the one more enabler which we were waiting was which came thanks to Reserve Bank of India and the interaction of IFSCA with Reserve Bank of India. I think this came on the 31st of January, whereby now Reserve Bank of India has enabled the US dollar flow to IIBX for import of TRQ gold. So you can refer to this circular if you have any questions, or you can also show it to your banks in case your banks say that they are not in a position to remit dollars at all. So this was also a very important step which has come from the Reserve Bank of India, and now we are seeing a lot of traction. I believe a number has touched 60 odd, and every day 10, 12 applications are coming, which we are so glad to service them. For this, one more thing which I want to emphasize to all of you is that we have also spoken to DGFT, and what they have said that for all the valid TRQ holders, their names are already added in the database for nominated agency. So if you see the tariff rate quota application, the TRQ, the quota certificate which is with you, if you see that, there you will see there is a field for nominated agency. There now, once we enable you and we give you a certificate, after that you have to just go to the DGFT website, and there you have to change the nominated agency name, choose your own name because that name is already available in the drop down. And after that, once you get that TRQ quota, the revised name, please submit to us, and after that our team will explain to you how to start doing the transactions and all. So this is something which is very important which has happened.
सो अब मैं थोड़ा सा हिंदी में बता देता हूँ। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा हमारे IFSCA के सहयोग से 31 जनवरी की शाम को भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन दिशा निर्देश के तहत अब आप डोमेस्टिक एरिया से US डॉलर भेज सकते हैं टैरिफ रेट कोटा के अंदर गोल्ड लेने के लिए फॉर द वैलिड TRQ होल्डर्स। देखिए यहाँ पे जो वैलिड TRQ होल्डर्स में वैलिड वर्ड यूज किया गया है वो इसलिए किया गया है क्योंकि IFSCA फाइनली आपको उसको ऑथराइज करेगी, आपके सभी डॉक्यूमेंट जैसा IIBX उसको वेरीफाई करके उनको रेकमेंड करेगा, और अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट सही पाए जाएंगे तो उसके बाद वो एक फाइनल वैलिडिटी देंगे। ये नियम है, इसके तहत हम इस नियम के तहत हम लोग काम करेंगे। और इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम लोगों ने जो कॉमन पोर्टल बनाया है एक, तो जो भी आप डॉक्यूमेंट्स देंगे वही डॉक्यूमेंट्स IIDI हमारा जो डिपॉजिटरी सहयोगी है वो भी उसी डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस करके उन्हीं डॉक्यूमेंट्स पे काम करेंगे। अदर देन 2 और 3 डॉक्यूमेंट उनको जो आपसे लेने होंगे वो ले लेंगे सेपरेटली। उसके अलावा हम वो पोर्टल को, जो भी आप ट्रेडिंग मेंबर को चूज करेंगे, हमारे यहाँ जो लिस्ट है वेबसाइट पे, जो भी ट्रेडिंग मेंबर को आप चूज करेंगे उन ट्रेडिंग मेंबर्स को भी हम वो डेटा डॉक्यूमेंट्स एक्सेस करा देंगे सो दैट वो डॉक्यूमेंट्स उनको दोबारा ना लेने पड़े। अदरवाइज उनको जो अपने अकाउंट खोलने के लिए जो रिक्वायरमेंट होगी वो आपसे वो ले लेंगे। तो ये मेरे तहत से हम लोग का ये विचार था कि किस तरह से हम इसमें सहूलियत पैदा करें, किस तरह से हम इसको फास्ट काम करें। इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज है जो आपको मैं बता देता हूँ। जब आपको IFSCA का वैलिड TRQ होल्डर का लेटर मिल जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है कि ऑफ कोर्स डिपॉजिटरी का काम तो शुरू कर देना है साइड बाय साइड। आपको DGFT में जाके वहां लॉगिन में आपको नॉमिनेटेड एजेंसी में अपना नाम खुद ही सेलेक्ट करना है। मैं आपको बताता हूँ क्या है। अगर आप के पास आप टैरिफ रेट कोटा अगर आपके पास है और आप उसको ध्यान से देखेंगे, और आपने जब भी अप्लाई किया होगा तो उस समय आपने चूज किया होगा किसी बैंक का नाम या किसी क्वालिफाइड ज्वेलर का नाम। अब आपको वहां पे जाके चेंज करके दोबारा से वहां पे आपको अपना नाम, क्योंकि आप वैलिड TRQ होल्डर है और आपका नाम वहां पे DGFT ने इनेबल कर दिया है, ऐसा उन्होंने मुझे बताया है। तो आप अपना नाम, जैसे मान लीजिए ABC है, जो ABC एंड कंपनी जिनको टैरिफ रेट कोटा मिला है, TRQ मिला है, तो जो TRQ मिला है, तो जब वो DGFT की साइट पे जाएंगे वहां पे चेंज करने, तो नॉमिनेटेड एजेंसी में भी उनको ABC एंड कंपनी का नाम मिल जाएगा। तो आप उसको चूज कर लेंगे, उसके बाद आप यहाँ पे आके आगे की प्रक्रिया उसमें कर सकते हैं कि किस तरह से आप गोल्ड लें। साइमल्टेनियसली आप दो चीजें शुरू कर दीजिए कि डिपॉजिटरी के जो डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, एक बार जैसे ही हमारा अप्रूवल आता है वो आप दे दीजिए, वो लिमिटेड है, 2-3 है, बहुत जल्दी हो जाएगा। प्लस आप चूज कर लीजिए कि आप किसको ट्रेडिंग मेंबर और क्लियरिंग मेंबर लेना चाहते हैं। हमारे पास लिस्ट है, उनमें से जिसको भी लेना चाहें आप ले सकते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से, और उनके साथ आप एंगेज करके उनके क्या क्या ऑनबोर्डिंग प्रोसेस है वो देख लीजिए। मेन सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो हमारा है वो हम उनके साथ शेयर कर देंगे। तो ये हमारा ऐसा मानना है कि इसके तहत अभी सारी प्रक्रिया बहुत तेज हो जाएगी, और हमारा विश्वास है कि इस साल का जो कोटा है वो आप हमसे ले पाएंगे। तो सो इसी तरह से मेरा विश्वास है कि अधिक से अधिक लोग हमारे साथ जुड़ पाएंगे, जो कि IIBX का मकसद था कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमको हमारे साथ जुड़े। Now I will switch back to English for the next part of my talk. So you all are aware that this year the quota was 140 tons, and we believe that not many of you have still not availed that quota. So I encourage you to kindly join quickly on IIBX so that this year's quota you are in a position to avail. So we have adequate stocks lined up, and as you would have seen that some of the information which we have put in the public domain, and it is also available on our website. Everything is available on our website. You will find that we are seeing a lot of good traction on the TRQ gold because people are coming to take their quota for this year. And also for the uninitiated, let me explain that for the tariff rate quota, there is a 1% duty rebate which is available, which is you can avail it through us. In this regard, we are also talking to the regulator and government through the regulator
on some of the other enablers which we can introduce. I am not in a position to share that now, but once those enablers are coming, we will again have a webinar and advise you what are those enablers. And I'm quite sure those enablers will also be much more beneficial to you in the coming year. तो अभी मैं आपको थोड़ा सा हिंदी में बता देता हूँ जो मैंने बताया कि आप लोग जो DGFT की वेबसाइट पे अपना नाम चेंज करा लीजिएगा। आपका जो भी नाम है, जैसे मान लीजिए ABC एंड कंपनी, अगर आप TRQ है तो आप नॉमिनेटेड एजेंसी में वहां पे ड्रॉप डाउन में आपका नाम ऑलरेडी वहां पे अवेलेबल है। तो जैसे ही आपके पास इसका का लेटर अवेलेबल हो जाएगा, उसके बाद आप वो नाम वहां पे चेंज करा पाएंगे। तो वो प्रक्रिया भी आप जैसे ही हम लोग बताएं उसको शुरू कर दीजिएगा, वो 1 दिन 2 दिन का काम है। और साइमल्टेनियसली आप डिपॉजिटरी के लिए भी अपना प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स, कॉमन सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दोबारा देने की जरूरत नहीं है। उसके साथ आपको एक काम और करना होगा कि जो भी आपके ट्रेडिंग मेंबर्स हैं, उन ट्रेडिंग मेंबर्स को प्लीज आप सेलेक्ट कर लीजिए कि आप किन ट्रेडिंग मेंबर्स को लेना चाहते हैं। उनके साथ आप बात करना शुरू कर दीजिए। कॉमन सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हम उनको एक्सेस करा देंगे। अगर वो मांगे भी तो आप बोलिएगा कि ये डॉक्यूमेंट्स हमने IIBX को दिया हुआ है, आप वहां से ले लीजिए, वो हम उनसे बात कर लेंगे। लेकिन उसके अलावा उनकी जो एप्लीकेशन के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है, जो मांगे, वो प्लीज आप फटाफट कर दीजिएगा। तो स्टेप इस तरह से है, देखिए मैं बताता हूँ। IIBX में एप्लीकेशन आई, फिर वो IFSC से अप्रूव होकर हम आपको लेटर देंगे। IIDI की एप्लीकेशन आप भरेंगे, जिसमें कॉमन सेट ऑफ डॉक्यूमेंट आप एक बार हमको दे चुके हैं डिपॉजिट डीमैट अकाउंट खोलने के लिए। फिर आप ट्रेडिंग मेंबर के साथ अपना अकाउंट, ट्रेडिंग एंड क्लियरिंग मेंबर के साथ, या ट्रेडिंग मेंबर एंड क्लियरिंग मेंबर सेपरेटली, या जो भी आप करना चाहते हैं, जिस कॉम्बिनेशन में भी, उनके साथ आप अपना अकाउंट खोलेंगे। उनके लिए भी कॉमन सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है, आप उन्हें बता सकते हैं, और बाकी डॉक्यूमेंट जो मांगे वो आप दे दीजिए। साइमल्टेनियसली आप DGFT में अपना नॉमिनेट एजेंसी का नाम चेंज करने के लिए ऑनलाइन उसको चेंज करा सकते हैं, जो कि 2 दिन का प्रोसेस है। और मेरा ये मानना है कि आप ये प्रोसेस जितनी जल्दी कर ले उतना अच्छा है, क्योंकि कोटा 31 मार्च तक खत्म होने क्या है, उसका लास्ट डेट 31 मार्च है। तो उससे पहले आप जितना ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी वो कोटा आप हमसे ले सकते हैं, बिना IGCR की रिक्वायरमेंट के। मैं सिर्फ एक चीज और बताना चाहूंगा कि हमारे पास ऑलरेडी हमने जो पब्लिक इंफॉर्मेशन डाली, और वो हमारी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। ऑलरेडी TRQ वॉल्यूम काफी बढ़ गया है, क्योंकि लोग आ रहे हैं, गोल्ड स्टॉक अवेलेबल है, लाइंड अप है। आप जुड़िए साथ में, और आपको सभी चीजें मिलती चली जाएंगी। गोल्ड भी मिलता चला जाएगा, दोनों क्वांटिटी में गोल्ड, दोनों 999 प्योरिटी और 995 प्योरिटी, दोनों में गोल्ड मिल जाएगा आपको, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है। So this I wanted to restrict to the TRQ, but I think let me also tell you one more development which is happening, is that we are in the process of opening another vault. Right now our 3 vaults are in GIFT City. We are in the process of opening another vault in Chennai. I believe it is coming in GYAAN and GYAAN SEZ. I understand that vault manager has already readied the vault. It is under inspection. Various regulatory inspections are required. Once those approvals are in place, then before we activate that vault for Chennai SEZ contract, we will be requiring IceGate to become operational. So we understand that IceGate is also becoming operational there very soon. So so that will be another benefit to people, that some of you will be able to, would like to actually trade into Chennai contract, so that you are also able to take the TRQ gold out of the Chennai vaults, and you can get it the same day. तो मैं आपको ये सब और भी बताना चाहूंगा कि हमारे एक्सचेंज के प्रयासों से हम लोगों ने जो एक फीडबैक था आप सबका, हमारे रेगुलेटर ने गवर्नमेंट से भी बात किया, तो उसके बाद उन्होंने इनेबलर दिया कि किसी भी SEZ में IFSCA द्वारा अप्रूव वॉल्ट्स खोले जा सकते हैं। उसी के तहत चेन्नई में GYAAN SEZ में अगला वॉल्ट खुल गया मतलब तैयार हो गया है। उसके वेरियस रेगुलेटरी अप्रूवल्स पे काम चल रहा है। हमारा ऐसा विश्वास है वो भी जल्दी हो जाएंगे,
और एक बार रेगुलेटरी अप्रूवल्स आ गए तो उसके बाद एक ही चीज की जरूरत पड़ेगी कि वहां पे जय माता दी SEZ में आइस गेट कब शुरू हो जाता है। हमें ये भी बताया गया है कि वहां पे भी आइस गेट पे काम काफी तेजी से चल रहा है और बहुत जल्दी आइस गेट का काम वहां पे शुरू हो जाएगा। जब वहां पे आइस गेट लग जाएगा और हमारा वॉल्ट एक्टिवेट हो जाएगा तो हम लोग रेगुलेटर से परमिशन लेके चेन्नई कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्च करेंगे, ताकि आपको चेन्नई SEZ से भी डिलीवरी सेम डे मिल जाए। अब मैं आपको जैसा पता ही है कि हमारे एक्सचेंज में हम ग्लोबली फर्स्ट एक्सचेंज है जहां पे एवरी 30 मिनट्स BDR का सेटलमेंट होता है। सो ये आप ही लोगों के लिए किया गया है, ताकि आपको जैसे ही आप ट्रेड करें उसके इमीडिएटली 30 मिनट के अंदर, जैसे मान लीजिए अगर 10:25 पे भी ट्रेड हुआ तो 10:30 पे आपको BDR आपके खाते में मिल जाएगी। अगर सुबह 9:05 पे ट्रेड हुआ तो 9:30 पे आपको BDR आपके खाते में मिल जाएगी। और उसके बाद आप कस्टम का प्रोसेस शुरू कर सकते हैं कस्टम का क्लियरेंस करने के लिए। So I will also explain this particular last point in English, that as you know, we are the global first exchange where every 30-minute BDR settlement takes place. And it has become very, it has become a very efficient mechanism where whenever you trade, if you trade say at 10:25, you get your BDR in your demat account at 10:30. That is within 5 minutes. If you trade say at 11:05, you get it by 11:30. So within 30 minutes, you will get the BDR in your account. And these are some of the very good developments. And once we have the uh, Chennai vault ready, so we will also have the Chennai contracts, and you will be able to take the gold out from Chennai vault same day, and whichever part of the southern India or eastern India, depending upon how the logistic looks like to you. You can either trade the Gift City contract or you can trade the Chennai contract. But we'll come to that. We'll give you that information when we are all ready. We just wanted to so ये मेरे को एक जनरल आप सभी को जो बताना था वो मैंने आप सबको बता दिया। और मेरा ऐसा विश्वास है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अब IIBX के साथ जुड़ेंगे। हमारी टीम, हमारे यहाँ मिस्टर शरत हैं जो कि सदर्न स्टेट्स को देखते हैं, और आप बहुत सारे लोग आप जानते हैं उनको। हमारे यहाँ बिपिन जी हैं, बिपिन पांचाल जी, वो अपना गुजरात को देखते हैं, राजस्थान को देखते हैं, वेस्ट बंगाल को देखते हैं। फिर हमारे पास मुकेश जी हैं, मुकेश जी महाराष्ट्र को देखते हैं, और पंजाब, दिल्ली और उत्तर प्रदेश और स्टेट्स को देखते हैं। हमने टीम को अभी बढ़ाया है, और भी लोग ज्वाइन किए हैं जिनको हम धीरे धीरे स्टेट अलॉट कर देंगे, ताकि आपका जो रिलेशनशिप मैनेजर है वो आपके साथ टच में रह के आपको हेल्प करा पाए, आपकी ऑनबोर्डिंग में हेल्प कर सके, आपको ट्रेड में बता सके क्या हो रहा है और नई नई चीजें क्या आ रही हैं, वो आपसे टच में रहे। So we also want to tell that we have Mr. Sharath who takes care of the southern states. I'm sure many of you have met him. And after this call, and at the end of this call, I'll also give you the email ID where you can reach us for any information and all related to this piece. We have Mr. Bipin Panchal who takes care of Gujarat and West Bengal and Rajasthan and other states. And then we have Mr. Mukesh. Many of you have met him. He's taking care of Maharashtra, particularly Mumbai, Delhi, Punjab, Haryana. Of course. So we have also added to our team strength. So some of the other states also will be handled by the new person who has just joined us, and we'll be slowly introducing him to you all. So abhi Saurabh ji, this was the major point which I wanted to share. So if we have some time, next 10-15 minutes, we can have some kind of questions from the audience, or if there are already some questions which are there
in the chat box. Let me see, and we can slowly speak about it. Okay. So I think many of the people comment in both the languages. So I hope that particular point is sorted. There is one Mr. Aditya. He has written, "Sir, can you please share the list of common set of documents?" So I'm just typing here the email ID in the chat box. So I have a request that please send your mail to this email ID, and our team will reach out to you. Please definitely give your uh, your phone number and email. All that you please give here, so that they will guide you. And many of the questions and all which you have, that also you can give to our bd@iibx.co.in. So our respective RMs, they will be able to help you with your queries. So that is why I've also put this email ID on the chat box for everyone. So kindly take a look at it. There is a Mr. Jagrat's. Is there a Q&A? Of course, there is a Q&A session which we are right now having. I have a suggestion. Please type your suggestion here. Then there is a Gaurav, how to get. So kindly reach out to the DGFT website. They will give you full details. And there is a one more question from iPhone 2. We have TRQ, so we can sell bullion directly. Let me explain. I think, I don't know whether you missed it. I had already explained that I have read out the that custom notification number 66 of 2023, dated 22nd December 2023, whereby customs has said that import of IGCR, custom IGCR or for specific end use rules 2022 shall not be applicable if the importer and the TRQ holder are the same entity. So what has been explained to us that whereby that means that whether you want to manufacture gel bullion, you can freely sell that bullion directly to whoever you want. Another question is, what do we mean by trading members? So RN bullion and jewels. So please send please write bd@iibx.co.in. Trading member means that you come as a client of a trading member. So let me explain that if you come as a when you do a equity trading, you have a broker, trading member. Okay, and then you have to choose them and you have to come. Then next question is SOP mentioned by you is applicable to QJs. So QJs also has a SOP, and valid TRQ holder also has a SOP. There is a minor difference. Kindly refer to the SOP which is applicable for the valid. Or if you want a direct somebody to explain to you, kindly send a mail to bd@iibx.co.in. Our team members will reach out to you and they will explain to you. So I think I have now handled all the questions. Okay. What would be the ITCHS and how to choose? Please send a mail regarding the other questions. Please send a mail to BD. Our team will definitely help you out with all the details which you are asking. Okay, Saurabh, this was from my side, and over to you, Saurabh. तो किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी विल एंड द सेशन। देखो चैट में जितने क्वेश्चन थे वो मैंने जवाब दे दिए हैं। बाकी जो क्वेश्चंस के जवाब डायरेक्टली नहीं दिए हैं, मेरा रिक्वेस्ट है आपको जो मैंने ईमेल आईडी दिया है वो बीडी पे डाल के bd@ibx.co.in को अपना क्वेश्चन डाल दीजिए, और प्लीज अपना फोन नंबर और ईमेल आईडी, ईमेल तो खैर होगी, फोन नंबर, नाम और मोबाइल नंबर प्लीज दे दीजिए, तो हमारी टीम आपसे बात करके आपको पूरी चीजें एक्सप्लेन कर देगी। So we end the session, sir. Hello. Yeah, anybody wants to ask? Otherwise, I also, before you end, can I just say thanks to everyone
I thank you. I think we hit a century. More than 100 persons joined it today. So we are very happy that you all came in. Thank you very much. And आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. आप लोग वेबिनार में आए. And मेरा आपसे सबमिशन है कि आपको जो भी क्वेरीज हैं आप कृपया bd@iibx.co.in पे भेज दीजिए, जिससे हमारी टीम आपसे रीच आउट करके आपको वन ऑन वन समझा सके. थैंक यू वेरी मच. So thank you, Ashok ji, and thank you to World Board Council. So we end the session. Play one video and then we end the session. Thank you very much. Thank you everyone. Thank you. Thank you, sir. Thank you. We all have something deep within us. Something that's worth gold. So go ahead, show your confidence. Show your spirit. Show your grit. Show your strength. Show the world who you really are. And celebrate your essence with gold. You are precious. You are brilliance. You are bold. You are gold. So thank you to all, and thank you, Ashok ji. Thank you very much.